Good morning, all of you. Welcome you all in this platform of StudyIQ OPSC channel. So today is 30th May. I hope audio and video both are working fine. Okay, so let's start today's discussion. So please share this video with your friends as well. Okay, so that more students can be benefited. Start kariyo. Okay, fine. Chalo. Daily news. Interpol's first silver notice legalizing assisted dying in France. India's first gene-edited sheep. Menstrual Hygiene Survey 2025. India's participation in Sangrila Dialogue 2025. Naxal-free Bastar. 3 judges appointed to the Supreme Court. One-liner. Meow Lizzy. Asian Weightlifting Championship 2026 in Ahmedabad. Mizoram's capital Aizawl connected to rail network. Pedicularis Rajesiana and Kamirita Serfa, and along with this we have a few Odisha related news as well. Okay, चलो start करिए. Interpol first silver notice. So Interpol issues silver notice on India's request, targets ex-French embassy officer Shubham Sokin in visa fraud probe. Okay, so ये silver notice कौन देखिए? Accused किए शुभम शौकीन जो former French embassy official. Case allegations on large scale visa fraud and illegal wealth accumulation. Visa fraud and illegal wealth accumulation. Action. Interpol issued its first silver notice on India's request. तो Interpol जो होची से first कौन करची? First silver notice जारी करची on India's request. So what is the silver notice? से भी देखिए हमें. So देखो Interpol notices, red notice wanted person जी, wanted जी, yellow notice missing person, blue notice additional information, black notice unidentified bodies, green notice warning and intelligence, orange imminent threat, purple modus operandi, silver notice that is identification and tracing of criminal assets. Okay, identification and tracing of criminal assets. So, iju person Shubham Sokin against a silver notice jari कराई. Okay. Interpol UN Security Council special notice, that is entities and individuals subject to UNSC sanctions. What is silver notice? Color coded alert introduced by Interpol in January 2025, similar to red notice. Purpose: identify, tracking and seizing assets linked to criminal activities. Okay. Identify, tracking and seizing. Legal basis: facilitating assets recovery internationally. Facilitating asset recovery जो different countries रे जदि asset किछि अछि that will be recovered. So asset recovery internationally. How does it work? केमती काम करे देखो. Member countries CBI Interpol रे member किए अछि इंडिया रा CBI. India is a member and CBI on behalf of Government of India request silver notice to Interpol, reviewed by the Secretary General to prevent political abuse. Okay, applicable crimes यदि fraud रे engage थिबो then silver warning जारी करा हबो, corruption, money laundering, narcotics, environmental crimes, etc. Okay, pilot phase limits, 9 notices can be issued per country by November 2025. So समथिंग नहीं कि जितने चाहिए अपन सिल्वर नोटिस जारी कर दो. So that has a limit, and limit कोटा 9 notices, naughty notice. Okay. Procedure in India: nodal agency CBI for Interpol cases. Okay, nodal agency CBI for Interpol cases. Other agencies ED, state police can also cooperate. तो nodal agency मन रखते हुए CBI जी की on behalf of Government of India is the member of Interpol. Okay. Background of the case: who is Shubham Sokin? Former French embassy officer in India. French सब जानते हुए अपनो embassy प्रति country रो. Suppose India capital Delhi and Delhi रे you will have all those countries embassy. Okay, जोटे ambassador भी थांती, diplomats and other officials. तो नोटे officials थिले Shubham Sokin करे. Allegation: visa fraud, issuing illegal visas through fake documents.
एथे पर फ्रेंच नेशनल्स माननकु वीजा से फेक डॉक्यूमेंट रे इशू करूथबे इलीगल एसेट्स इन्वेस्टिंग स्कैम मनी अब्रॉड तो ऑब्वियसली सिंस इलीगल वीजा इशू करूथले चांसेस अछि इलीगल मनी मध्य से नैथिबे ओके इंडिया स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन थ्रू सीबीआई एंड ईडी इंडिया स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन थ्रू सीबीआई एंड ईडी now efforts to track properties by issuing silver notice so silver notice one jari kara hi so jitte countries re jaha bhi fraudulent or money laundering hi chi ya illegal money acquire kara jai chi so that will be traced okay now France National Assembly adopts long debated bill legalizing end of life option means jota ka ame euthanasia boli koche okay bill France National Assembly has passed a bill legalizing assisted dying. Assisted dying. Those people are facing pain in their life, suffering from different diseases. So they need what? जोटा कि आमे कहूचे assisted dying. So उनको assist करा जिवो मृत्यु रे. So that is euthanasia जो self आमे कहूचे ना. It allows adults with terminal illness to receive medication to end their life. So धीरे धीरे सेटा कौन करा जाए सपोर्ट सिस्टम को हटे दिया जाए ओके यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट यूथनेशिया और असिस्टेड सुसाइड इज ऑलरेडी लीगल इन कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड नीदरलैंड बेल्जियम एंड स्पेन इन दीज कंट्रीज यूथनेशिया और असिस्टेड सुसाइड इज लीगल ओके एंड यूथनेशिया कुड बी अपन जो एथिक्स पेपर अच्छे ना ता पाई भी एटा गोटे केस स्टडीज टाइप रो या गोटे टॉपिक भी इज यूथनेशिया एथिकल ओके यूथनेसिया टा केते एथिकल से अनुसार एटा जो आपनकर अछि लॉ डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स सो एथिकल मस्ट नॉट बी लीगल और लीगल मस्ट नॉट बी एथिकल ये जो यदि आपण जानि थेबे एथिक्स रो तनु यूथनेसिया कुड बी दैट टॉपिक ओके तनु लीगल कोडी अछि स्विट्जरलैंड नीदरलैंड बेल्जियम एंड स्पेन एथिकल एंड सोशल कंसर्न ओके फर्स्ट होजी रिस्क ऑफ pressure elderly or disabled people may choose assisted dying under family or social pressure तो जो माने disabled person अछन elderly population अछन they feel we are dependent on someone okay we are ill treated so there is a chance they will prefer to die तो इटा गोटे केते ethical ता माने हमें we can disbalance or imbalance the social order तो सीत पे कोआ जोची pressure रे आसी कि भी समाने opt करी परन so that is the reason it is ethical and social concern हमें raise करूचे people may consider it an easy option to avoid financial burden ये भी ही पर easy option to financial burden okay misuse euthanasia has been practiced in the mentally ill in the Netherlands and Belgium which is controversial question on the role of doctors would they choose to end life rather than save life so it's a question on the doctor as well would they prefer to save the life or save the person or they will help to die तो सेत पे एटा कोआ जाउची मिसयूज भी ही पर सो एथिकल कंसर्न असुची religious and moral opposition many religions consider human life sacred and condemn its termination obviously suicide is a crime right suicide is a crime so contradictions to medical ethics doctors are sworn to save life in the Hippocratic oath तो डॉक्टर जो oath नौचंदी no it's always passive active in the sense it's always passive okay so doctors are shown to save life that is Hippocratic oath okay तो डॉक्टर जो resolution नौचंदी oath नौचंदी कि हमें we need to save life तो that will go contradictory to that okay status देखिए इंडिया रे passive euthanasia that is withdrawal of life saving treatment तो जो ट्रीटमेंट आपण दोचन जो लाइफ सपोर्ट अछि धीरे धीरे सपोर्ट को कम करियो ओके इज लीगल बट एक्टिव euthanasia और असिस्टेड सुसाइड इज इलीगल राइट तो ये जो पैसिव euthanasia that is withdrawal of life saving treatment सेटा होची लीगल बट एक्टिव जो अछि आपण डेलिबरेटली चाहुचन ताको मारिबा पय सो दैट इज इलीगल important judicial decision Aruna Sandberg case
Supreme Court allowed withdrawal of life-saving treatment in permanent vegetative state. Okay, जो बहुत गुडे पेशेंट आपण देखिबे सबने कोमारे थांती एंड देन दे रिकवर्ड तापरे लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट चले तो ये सब केस रे भी अरुणा सैनबर्ग केस सुप्रीम कोर्ट अलाउड विड्रॉयल ऑफ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कॉमन कॉज केस 2018 right to die with dignity recognized under article 21 of right to life. Okay, तेणु मन रखते ये जो एक्टिव अच्छी असिस्टेड सुइसाइड न होइकी आपण कोन असिस्टेड सुइसाइड माने आपण कहि परिबे कि धीरे धीरे ताको उटे आपण पॉइजन दोउछन से धीरे धीरे डेथ होउची स्लो पॉइजन जेमते हमें कहयो बट एटा कोन ऑब्वियसली यू आर नॉट पॉइजनिंग और समथि किछि मेडिसिन दोउना कि से डेथ हे जो रादर आपण सपोर्ट सिस्टम विथड्रॉ करि करि चलछे. ओके, सो कॉमन कॉज केस 2018 रे कहै जाउची राइट टू डाई विथ डिग्निटी. तेणु जो कहते कि इच्छा इच्छा मृत्यु जोटा आपनकर यू हैव ए राइट्स टू डिसाइड राइट टू चूज कि मु मरिबि ना नहीं. सो से टाइप रो जिंस राइट टू डाई विथ डिग्निटी योर बॉडी योर डिसीजन. तेणु रिकॉग्नाइजिंग अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, passive euthanasia withdrawal of life saving treatment is legal. Same slide. Okay, next, India's first gene edited SIP. Kashmir University researchers produce India's first gene edited SIP, birth of a new era. Gene edited SIP देखिबा. Researchers from the University of Kashmir in collaboration with Indian Council of Agricultural Research have created India's first gene edited SIP. India's first gene edited SIP. Plus, see, final decision तो इटा डिपेंड कर सपोज गोटे पेशेंट चाहिला कि मोरो मते यूथनेशिया पैसिव यूथनेशिया दरकार. ओके, तो फर्स्ट जिंस होउची कि द लॉ ऑफ द लैंड कोन कोच इट्स लीगल और इलीगल. द लीगल तो ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ नहीं एक्टिव यूथनेशिया नहीं with the consent of family of course, okay, and medical authority. So obviously police will be informed as well. ये सबू समस्त का consent रे ही final decision निया गला and consent form रे sign करा जाउची. illegal जदी someone wants to die तो obviously से case टी कोर्ट की जो कोर्ट को जाई पारे से कोर्ट को जाई पारे तापरे कोर्ट decide करी पारे whether दिया जाई पारिबो ना नहीं. इलीगल जदी तो तबे प्रॉब्लम तबे कोर्ट केस सब हो. इफ लीगल तबे किछि प्रॉब्लम नहीं. ओके, फैमिली पेशेंट एंड ऑब्वियसली मेडिकल स्टाफ एंड द पुलिस एति की होची जिंस. टेक्नोलॉजी माइस्टोटेटिन जीन एडिटेड यूजिंग CRISPR-Cas9 मन रखिबे CRISPR-Cas9 लीडिंग टू 30% increase in muscle growth. This trait is naturally found in European breeds. Example, textile SIP, but not in Indian breeds. Feature, no foreign DNA was added, so it is not a transgenic animal. So, जो first gene edited SIP टी अछि, that has been used CRISPR-Cas9 technique, जो gene editing technique जोटा अछि CRISPR-Cas9, कोनोसी foreign gene को use करा जाय नाही, तेनु not a transgenic animal को आजोची. Okay, this trait is naturally found in European breed but not in Indian breeds. So no feature, no foreign DNA was added. It is not a transgenic animal. How it works? A specific sequence of DNA is targeted by a guide या gRNA. The Cas9 protein cuts both standards of DNA, creating double strand break. Okay. The cell's own repair system changes the gene while repairing this break. Nobel Prize 2020, this award in chemistry was given to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna for the discovery of CRISPR technology. तो 2020 रे मानको नोबेल प्राइज में मिलिथिला. ओके, नोबेल प्राइज में मिलिथिला. Advancement in India. The NDRI, National Dairy Research Institute, developed a gene-edited buffalo embryo. A gene-edited rice variety was also released recently. Gene-edited जोटा आपनकर
बीटी टेक्नोलोजी आपण जानिथिबे ओके तो अवश्य बीटी आड़ को आम जाइनु एपर्यंत कारण बीटी को कमर्शियली आम यूज करूने ओके कॉटन यूज होउची कमर्शियली सॉरी फूड पर्पस आम यूज करूने कमर्शियली यूज होउची कॉटन आम यूज करूचे बीटी कॉटन जोटा कहूचे टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन कारण बीटी को बर्तमान कंजप्शन स्टेज रे नहीं कि आम आसिम ओके कारण बर्तमान सुधा रिसर्च ता ऊपर चली एनीवे नेक्स्ट menstrual hygiene survey 2025 menstrual hygiene refers to hygiene management during menstruation use of safe products and awareness this includes use of hygienic sanitary products pads menstrual cups and tampons proper disposal method access to sanitation facility and education and myth busting okay survey social media and misinformation 71.6% of Indian women rely on social media for menstrual information only 11.5% rely on online advice in emergencies reasons fake remedies like coffee reliefs cramps superstition not going to temples etc okay so misinformation social media रो impact भी रोची you can use जेतोले जदी किसी समथि क्वेश्चन आसे इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 रे ई स्टैटिस्टिक्स यू कैन यूज ओके जो सर्वे अपन रहीतला सर्वे रे इंफॉर्मेशन ये जो स्टैटिस्टिक्स एटा अछि यूज ऑफ हाइजीन प्रोडक्ट्स 87.8% of women use sanitary pad only I mean 13% या 12.2% you can say people or women are not using 5.7% prefer disposable period panties 35.4% of women shop online due to convenience okay health challenges 82.7% of women experience menstrual pain 41.5% do not use painkillers global statistics 500 million women do not have access to menstrual hygiene facilities as per the UNICEF data this is alarming or something okay I think you know this कि स्कूल चिल्ड्रेन मानकर भी वर्तमान सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट जो सैनिटरी पैड गुडी को डिस्ट्रीब्यूट करा जाउछ ओके अवेयरनेस भी क्रिएट करा जाउछ द थीम ऑफ ये स्लाइड भूल रे पळेस मेजर चैलेंजेस मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिथ false remedies like menstrual blood for skin treatment okay false remedies superstition no entry in the temple during the menstruation washing of hair etc misinformation myths भी किछि अछि जो गुडी को challenges हिसाब रे क्रिएट होउछि social stigma देखंतु 6% of women avoid online discussion for fear of privacy 4% fear of social judgment unequal access lack of hygiene products and toilets in rural areas in fact in schools भी जदि आपण देखिबे economic barriers poor women use cloth or unsterilized products okay तो यूज unequal access रो किछि statistics next India's participation in Sangrila Dialogue 2025 CDS to attend Sangrila Dialogue 2025 to strengthen defense diplomacy and engage with global military leadership date 30 May to 1st June this Sangrila Dialogue is really kind of a conference okay Sangrila Hotel Singapore representation Chief of Defence Staff General Anil Chauhan will participate from India's side previous reference no Indian official attended the Sangrila Dialogue 2024 2018 Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to attend the dialogue 2018 रे प्रथम इंडियन प्राइम मिनिस्टर हिसाब से अटेंड करथिले संग्रिला डायलॉग बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस इट इज एन एनुअल डिफेंस सिक्योरिटी समिट that provides a platform for discussing security challenges in the Asia Pacific region Asia Pacific region सबुठु बड़ सिक्योरिटी चैलेंज होची प्रेजेंस ऑफ चाइना ओके It is attended by defense experts, policymakers, military officials from Asia, Europe, America, and West Asia. It is an influential platform for bilateral and multilateral security dialogue.
ओके बायलैटरल और मल्टीलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बायलैटरल द्विपाक्षिक जोटा आम कहे मल्टीलैटरल मेनी सच मेनी कंट्रीज नो नो हाँ यस करेक्ट जो राइसिना डायलॉग जोटा अच्छी जमती संग्रेला डायलॉग रो गोटे टाइप रो से टाइप रो एमाने भी कर सिंपली काइंड ऑफ ए कॉन्फ्रेंस समिट जमती आपण देखिबे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव गोटे हुए सब गेस्ट मान डकई सब पचरा जाए तो यहाँ भी से टाइप जिन काइंड ऑफ ए डायलॉग प्लेटफॉर्म डिस्कशन से टाइप किसी एग्रीमेंट ये सब किसी हुए करेक्ट केवल जमी बर्तमान सीडीएस जी सीडीएस को पचरा जी भाई ऑपरेशन सिंदूर केमती कल कौन है कौन ना कौन आपंकर प्लान अच्छी नेक्स्ट टेरेस्ट ये टाइप डिस्कशन गोटे काइंड ऑफ इनफॉर्मल चिट चैट आप कहीपर नेक्स्ट origin it was conceived by British strategist John Chipman. He designed the forum in 1990s with the former Singapore Prime Minister Lee Kuan Yew. It is organized by London-based think tank International Institute for Strategic Studies, collaboration with Singapore government. First summit held in 2002 at Shangri-La Hotel in Singapore, which has now become the permanent venue. तो सही संग्रीला होटल रे ही सबले होची नक्सल फ्री बस्तार 40 years of struggle ends as government declared 6 districts free from extremism. The Indian government has officially removed Bastar and Kondagaon districts in Chhattisgarh from the Ministry of Home Affairs list of left-wing extremism affected areas, making a significant milestone in the fight against Naxalism. Main points. The Ministry of Home Affairs has officially removed Bastar and 5 other districts from the list of left-wing extremism affected areas, signaling a new era of peace development in the region. Dantewada, Bastar, ये सब माने नक्सल रा एपिसेंटर बोली को आजे. So when we say Bastar is free from Naxalism, that means जो हमर गोटे जो टारगेट गोटे अच्छे ना कि हमें 26 सुधा हमरो complete zero Naxalism रहिबो, elimination of Naxalism, it will help in that direction. The shift comes as a result of relentless counter-insurgency operation with over 8,000 Maoists surrendering in the last decade. The latest crackdown in the Abjumar jungles resulted in the elimination of 27 militants or Naxals, including the top commander Basav Raju. The government's firm stance on eradicating Naxal presence has evidently paid off. Hopes of complete national eradication before the initial 2026 deadline. तो 26 सुधा जो टारगेट अच्छी ही पारे कि हमें ता पूर्वरु अचीव करिना हो. संजीव कौन exactly पचोड़ते हैं? Why in China, not other place? What is the meaning of that? So other districts of Bastar division देखो Sukma, Bijapur, Narayanpur, Kanker are still categorized as most affected left-wing extremism districts, while Dantewada features among the other left-wing extremism districts. You can see Bastar district एटा आपनकर छत्तीसगढ़ एटा एवं just border लगी के अच्छी आपनकर ओडिशा. This development signifies turning point in India's internal security, reflecting successful counter-insurgency efforts and paving the way for economic investment and social development in the previously affected areas. So now, since it will be Naxal free, तो obviously सेठी developmental aspect, development is सब जिनसा ही परिवो easily. कारण आगुरु सही माने ही सेटा को obstruct करूथिले. Now, 3 judges appointed to the Supreme Court. Center notifies appointment of the 3 judges in Supreme Court. Now the strength is 34 judges. Okay. May 29, 2025, the Supreme Court of India appointed 3 new judges, bringing the court back to its full sanction strength of 34 judges. The Supreme Court total strength kete achi 34 judges. Appointed judges: Justice N.V. Anjaria, Chief Justice of Karnataka High Court, रू एलिवेट ही के असले प्रमोशन पाई के असले पेरेंट यानी कि कोर्ट तंगर करियर स्टार्ट हेतला गुजरात रू. जस्टिस विजय बिश्नोई, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, पेरेंट राजस्थान रो. जस्टिस अतुल एस चंदुरकर, जज एट द बॉम्बे हाई कोर्ट.
Justice Bela M. Trivedi, जे current justice अछंती Supreme Court रे, is to retire on 9th June 2025, which will create a new vacancy. तापर हमें further देखिबा काहा को appoint करा जाउची. Why it is important? Maintaining the full strength of the Supreme Court is crucial for handling the increasing caseload and for upholding the rule of law in the country. So lack of judges leads to what? Pendency of cases. Okay, pendency of cases. No, Bilas, ये तीनटा का separate. अच्छा, जो strength आपण कहउछनी, strength होची आपनकर 34 judges रो strength. CGI अलगा रहिबो, Chief Justice of India. Okay, one liner. Miao Lizhi, China's basketball legend Miao Lizhi, named official ambassador of FIBA Women's Asian Cup 2025. China's basketball legend Miao Lizhi, named official ambassador of Women Asian Cup honor, became the third Chinese player to be inducted into the FIBA Hall of Fame in 2024. FIBA Hall of Fame in 2024. Event 2020 next to Asian Weightlifting Championship 2026 in Ahmedabad. 2026 Asian Weightlifting Championship कोठीटा होची आपण मन रखिबे वेन्यू अहमदाबाद गुजरात. ओके ओके 33 plus CGI. Okay, total 34. Correct. Date 1 to 10 April 2026. India previously hosted this championship in 1982 in Delhi as part of the Asian Game. 1922 रे first India ताको host करथला. Okay. 2025 championship held in Xiangasan, China, where India's Dilbag Singh and Siram Nirupama Devi participated but did not win a medal. इटे को मन रखिए 2026 रो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद वेन्यू. ओके नेक्स्ट मिजोरम्स कैपिटल आइजोल कनेक्टेड टू रेल नेटवर्क. आइजोल हैज बिकम द फोर्थ कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू बी कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे. अर्लियर दिसपुर असम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, नाहरलगांव Arunachal Pradesh were connected to the rail network. Now this Aizawl has been connected. Project name Bhairavi Sairang Rail Line Project. Bhairavi Sairang Rail Line Project. Okay. Project objective to connect Bhairavi to Sairang. Sairang is a satellite town of Aizawl, which is 20 km from the capital. So in difficult terrain, it has been fourth capital of a northeastern state. जोटा कि ताको रेल नेटवर्क लिंक मिली आइजोल को. पेडिकुलरिस राजेशियाना. Pedicularis rajeशियाना. Recently, researchers have discovered a new plant species, Pedicularis rajeशियाना, in the high altitude areas of Rohtang Pass in western Himalayan region. Himalayan region जोटी कि अपन को सबुटो अधिका हाईली बायोडाइवर्सिटी जो अच्छी सेटा अधिका आपन को देखिबा को मिले. आई मीन हाईली डाइवर्स्ड स्पीसीज देखिबा को मिले. द रीजन होची इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द लोअर हिमालयस टिल दिस ट्रांस हिमालय जोटा कि हमें कहूचे पीक हिमालय, तनु एठी ऑब्वियसली लोअर हिमालय रे गोटे टाइप रो क्लाइमेटिक कंडीशन रहइबो. अपर हिमालय जोटा अछि यानी कि ट्रांस हिमालय जोटा कि टॉप सबुटो सेठी भी गोटे टाइप रो क्लाइमेटिक कंडीशन रहइबो. So that is the reason there is a high amount of variation in biodiversity in Himalayan region. Okay. Pedicularis rajeशियाना, a new plant species have been discovered. This is a new plant species which belongs to a group of plants called luxodes. Okay, luxodes. These plants are semi-parasitic, that is, they carry out photosynthesis themselves, but also get some nutrients from other plants. Semi-parasitic. They carry out photosynthesis themselves. एक तो निजे photosynthesis करते किसी nutrients से मैंने अलगा plant रू भी नहीं था. Okay, they are dependent on other countries. Total of 83 species of Pedicularis are found in India, out of which 36 species are found only in the Western Himalaya. Okay.
Kamirita Serfa breaks world record by climbing Mount Everest for the 31st time. Kamirita Serfa. Kamirita Serfa broke her world record of 30 climbs set in 2023 by completing her 31st successful climb of Mount Everest. She has now become the most accomplished Everest climber in history. This achievement highlights the important role of the Serfa community in Himalayan expedition. Is 55 years. Okay. Odisha news. Odisha Coastal Highway Project politics hits off over alleged tender cancellation. Jyoti news rachi, but we'll see Odisha Coastal Highway Project. Odisha Coastal Highway is a major infrastructure initiative aimed at boosting connectivity along the state's coastline. Spanning around 451 km, the project will link Gopalpur in the south to Digha in the West Bengal. Okay, so Coastal Highway Project. Gopalpur to Digha, developed by the National Highways Authority of India. The highway is part of Bharatmala Pariyojana. मन रखते बेटे को Bharatmala Pariyojana. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कि क्वेश्चन लास्ट ईयर आसीथिला ए वर्ष भी आसी पारे. Belas Raut, partial attitude कहबा दरकार नहीं. It's completely, you can say, regional disparity, and nothing. I mean, no need to be so much emotionally. I mean, 75 years of independence we cannot provide. It has those difficult terrain, right? And northeastern, air connectivity bhi achi, road connectivity is good enough. Road connectivity already sarlani, but railway is something jota ki jehetu difficult terrain achi, so we are progressing. And 75 years of independence is not a very, I mean, बहुत समय ହେଇଗଲାଣି नहीं सेमती ना, like 150-200 years आपण जो डेवलप कंट्रीज गुड़िक देखती देखुंत आप यूरोप हो कि नॉर्थ अमेरिका हो, यू कैन सी से माने केते वर्ष हेलानी इंडिपेंडेंस मिललानी तो. ओके, यस, डिफिकल्ट टेरेन पई ही प्रॉब्लम होउची. एनीवे, द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रमोट टूरिज्म, फैसिलिटेट ट्रेड, इंप्रूव डिजास्टर रिस्पांस इन कोस्टल एरियाज. It will pass through key districts like Ganjam, Puri, Jagatsinghpur, Balasore, all those coastal districts. The highway includes bypasses, bridges, elevated corridor to minimize the environmental land acquisition issue. Once completed, the coastal highway is expected significantly to reduce travel time to boost the regional economy. Odisha to train school and college students on emerging technologies and cyber security. The Odisha government has initiated a comprehensive program to train school and college students in emerging technologies, cyber security, aiming to equip the youth with the skill relevant to digital age. तो स्कूल एंड कॉलेज जो आपन स्टूडेंट्स गुड़ी को अच्छी से मैंने ही से को ट्रेनिंग दिया जीवो कहाँ अंडर नूतन उन्नत अभिलाष नुआ ओडिशा scheme. The state plans to skill 1 lakh youths annually over the next 3 years in such as artificial intelligence, cloud computing, virtual reality, and data science, 3D printing. Okay. The Electronics and Information Technology Department has released a request for proposal to select agencies for conducting training camps. Central Institute of Education Technology, CIET, in collaboration with the NCERT and the Indian Cybercrime Coordination Center, has launched online training series on cyber security and safety for the students and teachers. Okay. The National Institute of Electronics Information Technology, Bhubaneswar, is offering intensive programs on emerging technologies including AI, cyber security, and ethical hacking for students. Navodaya Vidyalaya schools under PM Sri scheme. The Odisha State Open University offers a postgraduate diploma in cyber security covering topics like network security, white hat hacking, security analysis, providing advanced learning opportunities for the students. So basically, जो अपन human resources अच्छी, that human resources को we are building a trained human resources as per the emerging technologies or emerging field जो अच्छी,
ସେଥିରେ ଯେମିତି ସେମାନେ କାଫି acquaint ହେଇପାରିବେ। Okay, collaboration with organization like Microsoft India NEET Foundation aim to provide future ready skills to students in government colleges focusing on AI, web development and cyber security. Okay, and this initiative aligns with the Odisha vision to become a leading IT hub in India and trained and skilled workforce adopting cutting edge technologies and enhancing the state's digital infrastructure. MCQs देखिवा. Okay, it is considered similar to the color coded alerts introduced by the Interpol in January 2024. It aims to identify, track and seize assets linked to criminal activities. Answer कौन हबो कुहंतु? First, January 2025 रे एटा को लॉन्च करा जाइए. So this statement is incorrect. And identify, track, seize assets linked to criminal activities. This statement is correct. Okay, B huji only 2. Okay, next, the National Assembly of France has passed a bill legalizing assisted dying. It allows adults suffering from a terminal illness to take medication to end their life. दुईटी जगह स्टेटमेंट ठीक अच्छी. ओके, बोथ. नेक्स्ट, researchers from Delhi University in collaboration with ICR have developed India's first gene edited chip. Obviously this is University of जोटा हमरो एबे डिस्कस करथले University of Jammu, sorry, University of Kashmir. Okay, the myostatin gene was edited using CRISPR-Cas9 technology, leading to a 30% increase in muscle growth. ठीक अच्छी. तो ये स्टेटमेंट ठीक अच्छी आपनकर. इटा रॉन्ग. सो अगेन 2 ओनली. सी हबो केमदी? दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर? Yes. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan will participate from India's side in Shangri-La Dialogue 2025. In 2014, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to attend the dialogue. It is an annual defense security summit that provides a platform for discussing security challenges in Pacific Ocean, Asia Pacific Ocean. कौन अब यार आंसर कौन दो? 14 जो अच्छी एटा 18 हमें देखते ले. तो ये ठीक अच्छी. फर्स्ट, थर्ड ठीक अच्छी. 1 and 3 हवो D. Okay. China's basketball legend Miao Leze was named the official ambassador of FIBA Women. FIBA Women Asia Cup 2025. She became the third Chinese to be inducted into the FIBA Hall of Fame in 2024. कौन बेटा आंसर? ठीक है वो. दुईटी जगह ठीक है वो. बोथ. नेक्स्ट, deep sea fish species coast of Kerala. Both species were previously news तो मैं cover कर ही नहीं थी उधर. Okay, ठीक है देखियो. Both the following statement is correct regarding the recent discovery of 2 new deep sea fish species of the coast of Kerala. Both species were previously known and commonly found in Indian waters. The discoveries were made by researchers from the Zoological Survey of India and the Marine Biology Regional Center. जदियो एटा कवर हमें करिने टॉपिक टी, बट स्टिल क्वेश्चन मु आपन कहि दउची.
two new deep sea fish species of the coast of Kerala ଏବେ find out करा जाइथिला तो ସେଇଥିପାଇଁ the discoveries were made by the researchers from the Geological Survey of India and Marine Biology Regional Center. Okay, next देखिबा Odisha Coastal Highway. It is being implemented under the Sagarmala program, connect Gopalpur in Odisha to Digha in West Bengal. NHAI is the implementing agency for this project. Answer कौन होगा बेटा? एटा होची भारतमाला परियोजना. ओके, सागरमाला होची आपनकर पोर्ट, भारतमाला परियोजना होची नेशनल हाईवे. तो 213 एटा. ओके, नेक्स्ट. Which of the following initiative is associated with Odisha's effort to train students emerging technologies and cyber security? Answer is what? Answer is Nutan Unnat Abhilasa Nuva Odisha scheme. Okay. Next. Which of the following statement is correct regarding the recent low pressure area Lopar over Bay of Bengal and impact on Odisha? ये Lopar हमें डिस्कस करथिले बोधे आगुरु जो देखिथिबे. ओके, जदि एटा आज डिस्कस करने तथा कहि दउची. The Odisha government has placed all district collectors on alert due to the Lopar induced heavy rainfall forest. Okay, ठीक अछि. आज मेन्स क्वेश्चन देखि नियंत आपण. दुईटी क्वेश्चन अछि मेन्स रो. फर्स्ट होची डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग emerging technologies and cyber security training into the educational curriculum. How can such initiative contribute to India's digital transformation, economic growth? Illustrate with examples from Odisha's recent program. एटी दुईटी जिनस अछि. एक तो सिग्निफिकेंस को डिस्कस करिवे आपण कि कोन तार सिग्निफिकेंस न्यू टेक्नोलॉजीज गुडिक एंड केमती कंट्रीब्यूट करिवो इन इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो एवरीथिंग comes with some cost, right? Everything comes with some cost. तो जदि good technology आसुची, better technology आसुची, obviously ता सहित किसी cost भी associate ही की रहिबो. And cost is what? जंती digital India program रे digitally हमें empower होचे. ता सहित cost कोन जंती cyber security या cyber threat जो आसुची. Okay? Social media रो जो negative impacts उड़ी को छी cyber bullying ठो आरंभ करिकी ये सब जिंस से I mean, from teenagers to school students to old age people, elderly population, everyone is quite affected. Okay, तो सही जिनसों को अपन इठी significance लिखिए कि we need to be trained with the new technology. Since they discuss the significance of recent discoveries of deep sea fish species along the Indian coastline, how do such findings contribute to understanding marine diversity and what implications do they for conservation effort? ये जिनस जो काली हमें सी काउ डिस्कस करथिले. हाँ हाँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी ऐड करिवे जेमते हमें डिस्कस करूथिले. काली जेमते हमें सी काउ डिस्कस करूथिले, सी हॉर्स हमें डिस्कस करथे आगरु. ओके, तो सेही जिनस को एठी सिग्निफिकेंस लिखिबे कि मराइन लाइफ रो कोन सिग्निफिकेंस अछि. मराइन पोल्यूशन एबे होची, मराइन जो आपनकर प्लास्टिक पोल्यूशन मराइन रहूची, जोटा कि हमें प्लास्टिक बीट्स बोली कहु ना, छोटे छोटे जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स गुड खास करके अपन को जो स्वेज सिस्टम अच्छी स्वेज सिस्टम रो ही आसुची. ओके, तो ये सब जिनस गुडी को एठी मेंशन आपण करि पारे. चेष्टा करिवे एक टॉपिक टू लिखिया पई, बट एटा तो लिखिवे आज डिस्कस हमें करिछु. क्लियर? आउ कार किछि पचरिबार अछि, कंफ्यूजन अछि? ओके, तो देखो आज होची आपनकर 30th एवं 31st होची काली जो माने हमरो कोर्स एनरोल करबा को चाहूचंदी तो काली होची लास्ट डेट एक्चुअली. तेणु परिपूर्ण बैच रे एवं एटा होची गोटे फाउंडेशन बैच, इंटीग्रेटेड बैच. एटा प्रिलिम्स एंड मेंस कंबाइंड डिस्कशन होची हमरो. तेणु जदि आपण चाहूचंदी देखो ऑनलाइन क्लासेस रहिबो, आपनकर मेंटरशिप सपोर्ट रहिबो. ओके, आपनकर नोट्स आपन को मिलिबो. फैकल्टीज जो मैंने आप देखुं मु अच्छी सरोज सार अच्छा, शिवशंकर सार अच्छा, आपंकर पुरुषोत्तम सार अच्छा, मैं सब अच्छा आपन को पढ़ेबे. ता सहित आपन को 23+ टेस्ट सीरीज प्रिलिम्स फ्री मिलूची. आ गोटे सबुठ बड़ बेस्ट पार्ट होची
जदि आपनकर फर्स्ट अटेम्प्ट रे ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाउची देन मनी विल बी रिफंडेड ओके ई जिंस तेणु इटा पढ़ा जीवो आपनकर इंग्लिश एंड ओडिया क्लियर 31 मे होची लास्ट डेट अर्ली स्टार्ट ऑफर रो मेन होची तार माने होची कि आपण जल्दी फाइंड आउट करो ओके जल्दी डिसाइड करंतु आपन को सिविल सर्विस करिवार जदि अछि आपन ग्रेजुएशन एंड होची या पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हिची आपन डिसाइड करि पारु नांदी तो ये होची गोटे ऑप्शन आपन पाखरे अछि ठीक अछि एटा सेमती फाउंडेशन कोर्स बट ये होची आपनकर इंग्लिश एंड हिंदी ओके इंग्लिश एंड हिंदी अच्छा एठी को माने पढेबे आपन देखिथिबे स्टडी आईक्यू पीसीएस रे जो माने पढौछन ओके विपिन सर दीपक सर हिस्ट्री पढौछन ओके जेमती आपनकर दिव्यांशु सर इकोनॉमिक्स पढौछन ए माने सब पढेबे आपन इंग्लिश एंड हिंदी रे रहइबो ऑब्वियसली एठी भी सेमती आपनकर नोट्स अछि मेंटरशिप सपोर्ट अछि टेस्ट अछि बट एठी आपन को 12 प्लस टेस्ट फ्री मिलिबो एसे क्लासेस रहइबो राइट गाइडेंस आपनकर रहउची गोटे प्रॉपर शेड्यूल आपनकर दिया जिवो सिलेबस आपनको पूरा टाइमली आपनकर एंड करा जिवो ए सब जिंस अछि राइट इटा होची इंग्लिश एंड हिंदी अगेन जेन लाइव कोड यूज करिवे टू जॉइन सेमती हमर टेस्ट सीरीज भी अछि एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अछि पीडीएफ आपनको टेलीग्राम रे मिल जिवो फेसबुक एंड इंस्टा मध्ये मध्ये आपन फॉलो करि परिवे फॉर योर क्वेरी अच्छा सस्मिता कोन क्वेश्चन अछि आपनकर सी हर्स कॉन्टेक्स्ट रू किछि ऐड करि हबो हां देखोन सी हर्स सी काउ जो मु आपनको कहितली मराइन लाइफ को कंजर्वेशन हमें काहे की करिवा को चाहू राइट ई जिंस को लिखिबे मराइन लाइफ रे इंपोर्टेंस को लिखिबे ओके देखो तो सस्मिता जो माने ग्रेजुएशन जस्ट पास करूछनी एक तो प्रति कोर्स से परिपूर्ण हो किंबा आरंभ हो 2 वर्ष रो वैलिडिटी अछि तेनु पूरा गोटे वर्ष से माने कोचिंग सपोज ऑब्वियसली ग्रेजुएशन जो माने पास करिवे ए वर्ष करिवे नहले नेक्स्ट ईयर करिवे राइट ए वर्ष जदी करिवे ऑब्वियसली ए वर्ष जो अपकमिंग एग्जाम हबो तापे एलिजिबल हे परिवे समान जदी नेक्स्ट ईयर भी करूछन तो जो नेक्स्ट ईयर जो नोटिस आसीबो डिसेंबर रे तापे भी सेवन एलिजिबल कारण प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो मिली ही जाउची राइट या आपण जस्ट एग्जाम देले मार्कशीट आसी गला दैट्स फाइनल कि आपण एलिजिबल ले तेनु 2 इयर्स वैलिडिटी अछि माने गोटे वर्ष रो पूरा जो कोचिंग टा रहबो आ गोटे वर्ष रो कंप्लीटली आपण पाखरे सब किछ अवेलेबल अछि आपण आराम से एग्जाम दे परिबे तेनु जे कोनोसी से आरंभ हो परिपूर्ण हो जे कोनोसी बैच चाहिए से नहीं परिबे ओके आउ कार किछि कंफ्यूजन अछि डाउट अछि क्लियर तेणु आपणकर जो माने सांगसाथी अछंती 31 मे पर्यंत जो ऑफर चली छे हमर सेटा 9999 रे कोर्स अछि पर तापर अननेसेसरी 2-3 हजार टका एक्स्ट्रा आपन को दबा को पड़ियो सो केवल आपन को कोन करिवार अछि जेएन लाइफ कोड यूज करबो आपन को सेटा देखै भी दउची सिंपली स्टडी आईक्यू को जाई कि ना आपन देखिबे देखन परिपूर्ण बैच अछि एटी खाली बाय नाउ करिवार अछि बाय नाउ करिवे नंबर देवे ओटीपी आसीबो परिपूर्ण रे करि दियौ परिपूर्ण रे देखन इंग्लिश ओडिया इंग्लिश हिंदी जोटा सस्मिता आपण तांको पचारंतु जे एनरोल करिवे तांको पचार दियौ ओके जोटा भी कले चलियो किछि प्रॉब्लम नै तो एटी बाय नाउ करिवे नंबर एटी देवे नंबर देला परे ओटीपी आसीबो ओटीपी देवे पुनी थरे बाय नाउ करिवे सेठी 3 ऑफर्स या 2 ऑफर्स अवेलेबल लिखाई थिबो सेठी की जिवे कोड रे लिखिबे जेएन लाइफ डिस्काउंट हेई जिवो तापरे आपण जॉइन करि परिबे कार यदि प्रॉब्लम अछि मते आपण टेलीग्राम रे भी पिंग करि परिबे म आपण टेलीग्राम रे हेल्प करे देबे ओके आउ कार किछि कंफ्यूजन डाउट अछि ठीक अछि काली देखा हबो थैंक यू